Good morning, students. Now, after completing our first and second chapter, we are moving on to third chapter, that is your objects and classes. Already this chapter we have done in our 11th standard, but just one more time, only a revision we will do. So, starting with the very first topic today, what is class? So as you can see here, you all know what is class, and you can write your definitions also in your own terms or in your own language. So there are many definitions of class, like first is what class is the collection of data members and member functions, the very simplest definition, right? Now what are data members? Data members are actually what? Variables. Data members are variables, and member functions means methods. Member functions means methods. So when we combine or encapsulate these variables and methods together, then it will become a class, right? So this is the basic definition. Now we can also say what, like class represents a set of some objects. A class represents a set of some objects that share some common characteristics and behavior. This is the second definition. Or third definition also you can write it, that is what class is the blueprint or class is the prototype for any object. Now what does it mean? Blueprint or prototype का क्या मतलब होता है? It means it defines a outer structure for any object. It defines a outer structure for any object. For example, like suppose we are having a class flower. We are having a class flower, right? Now this is a class flower which can have any number of objects, like here lily, lotus, rose, sunflower and many more. Okay, now here the name of these roses, this one, 2, 3 and 4, these are what? These are objects. These are objects that will share some common characteristics and behavior, right? Now each object will have its own characteristics and behavior. Characteristics means attributes, right? And behavior means its use. Now this thing, what are characteristics and what are states, identity, that we are going to discuss in the next topic. Now just before moving to the next, so clarify this topic class. So class, you can write some definitions, like first one we have stated here. So class is the collection of data members and member function. This is the first definition here. Now second, you can write that class इज़ अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि वो डिफाइन करता है कि आउटर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का कैसा होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, एंड इन दैट बिल्डिंग देयर आर नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स आर देयर. सपोज 50 अपार्टमेंट्स आर देयर, ठीक है. सो दिस कंप्लीट बिल्डिंग इज एक्चुअली इज़ अ क्लास where these small apartments, these are objects. दीज आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है अलग हो, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा. बिहेवियर मतलब उनका जो पर्पस है हर अपार्टमेंट का वो सेम है, दैट इज़ टू लिव. ठीक है, वहाँ पे रहने के लिए अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, तो उनका जो यूज़ होगा, जो उनका बिहेवियर होगा वो सेम ही होगा. ठीक है, तो यानी कि क्लास के डिफाइन करिए इनका स्ट्रक्चर, यानी कि एक प्रोटोटाइप मॉडल है. ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमें अपार्टमेंट बनाने हैं किसी बिल्डिंग के तो हम डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. व्हाट वी विल डू इज़ व्हाट कि फर्स्टली वी विल कंस्ट्रक्ट अ रफ स्ट्रक्चर, यानी कि हम उसका एक प्रोटोटाइप बना दें कि एक अपार्टमेंट कैसा होगा, और एक अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करके उतने ही हमको 50 अपार्टमेंट बनाने हैं, 100 बनाने हैं, 1000 बनाने हैं एक बिल्डिंग के अंदर, तो ऑल विल फॉलो द सेम प्रॉपर्टीज़, राइट. सो यहाँ पे ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, ये क्या है हमारे एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स, और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये क्या है हमारे पास क्लास. ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन से कि क्लास क्या करता है, एक प्रोटोटाइप डिफाइन करता है, ये एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ what is the need of class. Next topic you can write in your notebook, write it, what is the need of class. So write the need for it, that class provide the convenient methods. आपने भी पढ़ा कि class is the collection of some functions. So class provides some convenient methods for packaging the logically related data together by the use of functions. ठीक है, classes provide some convenient methods for packing
together a group of logical related data items and functions that works upon them. So for this purpose we use class. Now next is what? Class. Next you can write the type of question that can come in your exam is class is known as user defined data type. Class is known as user defined data type, and class is also known as composite data type. Now you can write here, these two questions can come in your exam. Okay, so for the first one, why class is known as user defined data type? So you can write the answer, because we know it is created by what? User. It is created by the programmer. That means class is not a predefined data type. ये inbuilt data type नहीं है. ये कौन बनाता है? जो programmer होता है, who is actually writing the source code. यानी कि जो user है, जो programmer है, जो developer है किसी भी software का, वो इसको बना रहा है according to his or her requirement. So this is not predefined already in any language. So it is created by user. That's why it's known as user defined data type, right? So here you can write the definition that class is known as user defined data type. Write it, known as user defined data type because it is not a part of language. Because you write it because user defined data type is not a part of language and is created by a programmer. Because user defined data type is not a part of language and is created by a programmer. And as we know, class is defined by या is created by, as we know, class is created by user, hence it is a user defined data type, right? So this was for the first one. For the next, composite data type. Why class is known as composite data type? So composite, that means it is composed of a number of primitive data types. It is composed of a number of primitive data type. For example, if you write here like class, you make na class, suppose ABC, and inside it you write what? Int A, float B, double C. This is how you write. ठीक है, इस तरीके से क्लास बनाते हो. दैट मीन्स इन कंसिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू. दीज डेटा टाइप्स आर एक्चुअली व्हाट? प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम बोलते हैं. इनको यूज़ करके हम बना रहे हैं क्या? आर ओन क्लास, है ना. सो दैट मीन्स द क्लास दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. दैट मीन्स दिस यूजर डिफाइंड क्लास इज कंपोज्ड ऑफ प्री डिफाइंड डेटा टाइप. ये कंपोजिट डेटा टाइप जो है वो कंपोज्ड है, बनी हुई है किससे? प्री डिफाइंड डेटा टाइप को यूज़ करके. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कंपोजिट डेटा टाइप, right? So that's it. You can write your this one in your own language. Otherwise in the next video we will discuss some questions also. So here you can leave it because we will discuss questions also, like why it is known as user defined data type, why it is known as composite data type. So I hope this is clear. Now class topic is over. Now next is, what are data members? So data members are nothing but simply the variables. Data members are known as variables that we declare inside the class. So it is called data member of that particular class. यानी कि वो जिस क्लास में बना रहे हो उसके मेंबर बन जाते हैं, है ना. जिसमें आपने उसको डिफाइन किया, जैसे आप जिस फैमिली में रह रहे हो आप उस फैमिली के मेंबर कंसिडर होते हो. ऐसे जिस क्लास में आपने वो वेरिएबल को डिफाइन किया है, सो दैट विल बिकम द डेटा मेंबर ऑफ दैट क्लास ओनली वेयर यू हैव डिक्लेयर्ड इट. जहाँ पे आपने उसको डिक्लेयर किया है वो सिर्फ उसी का ही मेंबर कहलाएगा. ठीक है. सो ये हो गया आपका व्हाट आर डेटा मेंबर्स. नेक्स्ट इज हेयर, what are member functions? So member functions are the functions, or you can say methods, which we declare inside the class. कहाँ बनाते हैं? inside the class. So it is known as member function of that particular class. The most important thing to understand about a class is that it defines a new data type. Yes, we know, because हमने बोला ना कि class is known as user defined data type. That means we are creating our own data type. हम अपना खुद का data type बना रहे हैं. And once defined, this new type can be used to create objects of that type. हम एक बार if we are going to create we have created any class, so we can create any number of objects for that class.
राइट. सो दिस क्लास इज़ अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट. टेम्पलेट का मतलब हो गया कि प्रोटोटाइप जो पहले से बना हुआ है, ठीक है. सो इट वर्क्स एज अ टेम्पलेट, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर की तरह काम करता है. दस एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया इसमें कि वाई क्लास, दिस वन हियर, वाई क्लास इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ द क्लास. ठीक है, हियर. So why class is known as instance of the class? Because we know that an object possesses some instance variable and some member methods. हर object के अपने कुछ instance members होते हैं, मतलब instance variables होते हैं, member functions होते हैं that are already defined in the class. Hence an object is called the instance of a क्लास. मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर वही प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो उन्हीं वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस को फॉलो करेगा दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड और डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ द class. So this is the definition you can write again. I'm repeating one more time for the why object is called an instance of the class. So write it. An object possesses instant variables or instance variables and member methods defined within the class. Hence an object is called an instance of a class. So this was the next question, right? Third question, that means first we have done for the user defined, then second one composite data type, then we have discussed why object is called the instance of the class. Now because an object is an instance of the class, so you will often see the two words object and instance used interchangeably, है ना. हमने भी बोला कि ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस से बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट बोलें या इंस्टेंस बोलें, बोथ मीन्स द सेम थिंग, right? Now moving on to next word, syntax of class. So syntax, you know all how to declare, how to define it. Here class keyword you use here, then the name of the class, then here data type and the name of instance variable, then again here you are writing word type, that means the data type for any method. So from the first definition we have studied what कि class is the collection of variables plus functions. ठीक है, तो variable we have declared here and method. So method name one and parameter list, that is optional for you. If you want you can take the parameters also, and you will open the bracket and close the bracket, and this is called the body of the method. Whatever statements you will write inside this curly bracket, it is known as the body of the method. Then in the same way you can create the next method also. Here we are going to write the data type, and here the name of the method, parameter list if you need, if required, then opening bracket, closing bracket, and inside it the body of method, and here is the closing of class. So this is the general structure actually, right? So whenever the question will come in exam like what is class, so आपको क्या करना है, गिव एनी वन डेफिनेशन, मतलब ये जनरल डेफिनेशन देनी, ये नहीं देनी कि क्लास को यूजर डिफाइंड बोलते हैं, क्लास को कंपोजिट क्यों बोलते हैं. एक जनरल डेफिनेशन देनी है क्लास की, एंड आफ्टर दैट यू विल मेक द सिंटेक्स ऑफ इट इन द एग्जाम, राइट. नाउ नेक्स्ट इज here, look at this point, leave this point here. The data or variable defined within the class are called instance variables. Now this one also we will discuss in the next video, difference between instance and static variables, right? लेकिन अभी सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि the variables जो हम class के अंदर define करते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास, instance variables, right? Next slide. Here yes, how to create. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे creating our first class object, but before that we should know what are objects. What are objects? So you can write the definition for object, that it is a real and unique entity. It is a real and unique entity which have some characteristics and behavior. So this is the definition for object. Now you know what कि each object will have some characteristics, you can write, then will have some behavior, and each object will have its own identity also. These are the features that we are discussing actually, features of object. And state. These four are features of objects. Now moving on to the first point. First one is characteristics. So characteristics means
द प्रॉपर्टीज़, दैट मीन्स द एट्रीब्यूट्स. इंटरचेंजेबली टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑल मीन द सेम थिंग. सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर द प्रॉपर्टीज़ और द एट्रीब्यूट्स दैट एन ऑब्जेक्ट possess, that an object possess. For example, object, if we are using, suppose human being, सपोज ह्यूमन बींग इज़ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमने बोला भी डेफिनेशन में डिस्कस की कि इट इज़ अ रियल एंड यूनिक एंटिटी, है ना. एक रियल यूनिक एंटिटी होती है ये, रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट कर रही है. तो ह्यूमन बींग हमने कंसिडर किया कि एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब ह्यूमन बींग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल हो सकती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट अ ह्यूमन बींग कैन पॉसेस. तो ह्यूमन बींग के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, उसका नेम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एज, वेट, हाइट. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ह्यूमन बींग. ठीक है, सो डेफिनेशन इज व्हाट, दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट एन ऑब्जेक्ट possess. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बिहेवियर. नाउ बिहेवियर मीन्स functionalities. Behavior means functions, functionalities or the uses of any object. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, मतलब ह्यूमन बींग क्या क्या काम कर सकता है. ठीक है, तो क्या क्या फंक्शंस एसोसिएटेड हो सकते हैं, क्या क्या वर्क वो कर सकता है. नाउ ही और शी कैन स्पीक, है ना, स्पीक, वॉक, टॉक, रीड, यानी कि स्पीकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग. ठीक है, राइटिंग, स्लीपिंग, सिंगिंग. सो दीज ऑल आर बिहेवियर of an object. Done. Now moving on to the third one, identity. Identity का मतलब क्या है, पहचान, है ना. आइडेंटिटी, जैसे इफ़ वी आर हैविंग सपोज 4 फैमिली मेम्बर्स इन आवर फैमिली, वी आर टोटली 4 फैमिली मेम्बर्स आर देयर, राइट. सो हर किसी का अपना एक आइडेंटिटी होगी, और वो आइडेंटिटी क्या होगी, उसकी पहचान कैसी होगी, बाय इट्स नेम, है ना, बाय हिज और हर नेम. आप उनके नेम से बता सकते हो, उनको नेम के थ्रू उनको कॉल आउट करोगे, है ना. सो दैट इज़ व्हाट आइडेंटिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. सो आइडेंटिटी का मतलब होता है द यूनिक वे ऑफ रेफरिंग टू एन ऑब्जेक्ट. एक यूनिक तरीका किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने का, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल करने का, है ना. सो दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी. दैट मीन्स नेम वी कैन से एज द आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्टेट. स्टेट को यू कैन से इट एज सिचुएशन. स्टेट का मतलब हो गया सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस. ह्यूमन बीइंग जो होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस में हो सकता है. फॉर एग्जांपल व्हेन अ चाइल्ड विल गेट बॉर्न इन एनी फैमिली. ठीक है, सो ही इज़ इन द फर्स्ट स्टेज, यानी कि वो एक फर्स्ट स्टेट में है. ठीक है, देन when he will get grown up, then he will be in childhood phase. तो वो हम उसकी चाइल्डहुड स्टेट कहेंगे. जब वो थोड़ा और बड़ा होगा तो वो जाएगा हमारा टीनेजर स्टेट में. ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसके जो स्टेट्स हैं दैट आर गोइंग टू चेंज. ठीक है, फिर उसके बाद टीनेजर से पास ऑन होके वो जाएगा हमारा एडल्ट फेज में, राइट. सो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग मतलब ऑब्जेक्ट्स की टाइम के रेस्पेक्ट में अलग अलग क्या हो जाती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइम पे अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो डिफरेंट टाइम पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा. इन द सेम वे हर ऑब्जेक्ट की अपनी जो स्टेट होंगी अलग होंगी, डिपेंड्स कि उसको कौन सा मेथड एक्सेस कर रहा है, यानी कि जो मेथड उसको एक्सेस करेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स it represents or it depicts how the object has reacted to the methods applied to it. Definition, repeating one more time, it depicts how the object has reacted to the methods applied to it. यानी कि उस ऑब्जेक्ट पर आपने कौन सा मेथड कॉल किया है, उस ऑब्जेक्ट से आप कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो. जैसे आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया OB1 डॉट इनपुट, सेकेंड टाइम OB1 डॉट डिस्प्ले, है ना, या फिर OB1 डॉट इनपुट, OB1 डॉट कैलकुलेट, OB1 डॉट डिस्प्ले. इस तरीके से आपने 3 टाइम्स, यानी कि आप एक ही ऑब्जेक्ट को 3 स्टेट्स में यूज़ कर रहे हो. पहले आप उसको इनपुट करा रहे हो, सेकेंड में आप उसको कैलकुलेट पर अप्लाई कर रहे हो, एंड इन द थर्ड फेज यू आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट द आउटपुट. तो आप 3 तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेट्स में, है ना. सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. डन. Yes. Now next is, after discussing it,
how do we create any object? So here we are having this syntax. What we write is, first we write class name, then we write object name. ठीक है. Actually what we do, if we are going to discuss this, two methods are there, first and second. Generally we follow the second approach. How we write? Whenever we want to create any object, we write what? Class name, then we write object name is equal to the new keyword and then class name with the brackets. So here this is the general term जिसमें हम क्या कर रहे हैं, we are doing the declaration part and initialization part, you can say कि both are done at the same time. That means memory assigning और declaration part same statement में हो रहा है, यानी कि instead of writing two statements we are writing it once. ठीक है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट मेथड में हम क्या लिख रहे हैं, पहले सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं. जस्ट लाइक वी राइट इंट ए. सो ए डजंट कंटेन एनी वैल्यू, बट this line actually means what, that a is a variable that will contain a value of integer type. तो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है कि a एक वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, एक वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा. बट इस स्टेटमेंट से मेमोरी में कोई एलोकेशन नहीं होगा. दैट मीन्स मेमोरी विल नॉट गेट एलोकेटेड टू अ वेरिएबल ए बाय राइटिंग दिस लाइन ओनली. ये स्टेटमेंट सिर्फ क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ए विल अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर अ इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, बट इससे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी ए को, यानी कि वो मेमोरी में जाके स्टोर नहीं होगा, ना ही कोई वैल्यू होल्ड कर सकता है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली डिक्लेरेशन. इन द सेम वे फॉर यू नो वॉट, फॉर द ऑब्जेक्ट नेम द डेटा टाइप इज इट्स क्लास नेम. तो आपने यहाँ जब ऑब्जेक्ट नेम लिखा है दिस वन, so before that you will write its data type, that will be its class name. So here you will write class name, right? Then for object name, now you want to allocate the memory, so how you are going to allocate it? So object name is equal to new class name. That means this statement you have split it into two statements. Instead of writing one statement, you have split it into two statements. So आपने लिखा class name, object name and obj is equal to new class name. ये देखो, class name, object name. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आर क्लास नेम इज टेस्ट, सो वी हैव रिटन हियर टेस्ट, एंड ऑब्जेक्ट नेम इज OB, so we have written here test OB. So this is for the first line, and the next line we are actually allocating the memory. So you will write here OB is equal to new test. So this is the another way. By this way also you can make it. ठीक है. So there is no difference in it, मतलब आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ द डायरेक्ट. ये देखो, ये क्या है, डायरेक्टली डिफाइन दी ऑब्जेक्ट लाइक दिस. हम डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हैं और ये इनडायरेक्ट तरीका है, बट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. नाउ नेक्स्ट, नाउ आफ्टर डिक्लेयरिंग दिस सिंटैक्स, जस्ट वेट. yes now one example here. Now we have a class, public class my point. So you have started one class, ठीक है, and my point is the name of class here. Now you have declared two variables here, so these are known as what, data members, or you can say it as instance variables, instance CE. ठीक है, instance variables. Now this one, void display point, this is known as what we have discussed it as, this is member function, right? Now here is the body of the method display point, right, where we are actually displaying what, the values x and y. So directly we can write here x and y to display the values, so SOPLN. Now next is public static void main. Now here we have created, see, the first method we have applied how to create the object. So here is the class name my point, then the name of the object obj, then obj is equal to new, and then the class name along with brackets. Now here you want to use the value x and y that are already defined inside x. Here you can see here x and y, these two you want to initialize. Now these contains the value actually what, 0. So you want to refer it, you want to change the value, so you will write like this. क्यों आपको पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इफ़ आई वांट टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, सो वी हैव टू यूज़ व्हाट, डॉट ऑपरेटर. दिस इज नोन एज डॉट ऑपरेटर, राइट.
dot operator. So if I want to call any data member or member function of a class, then that means outside of the class. अगर हमें कोई भी member access करना है class का, class के बाहर, तो हमें उसे कैसे यूज़ करना पड़ेगा? by the help of dot operator. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? So here what we will do, we will write here obj.x is equal to 10 and obj.y is equal to 20. It means what? That when you will write this line obj, so what will happen here? One obj will get created in the memory, ठीक है? And for we know what, for because object is the instance of the class, that means whatever variables and member methods are defined in a class, same an object will also possess. So here x and y will get created for obj, that will initially contain the value 0 0. Then after this, when you will change the value obj.x is equal to 10, so here the value will get updated to 10, and you have written obj.y is equal to 20, so here it will get updated to 20, right? And after that you will call the function display point. So display point के लिए जब आप call करोगे, so this function will get called display point, and here the output will be what? Printing the coordinate x and y. Now here we are not writing ob dot x for printing, we are directly printing the values of x and y. The reason is what? Reason is here is that we can access a non-static variable inside a non-static member method directly, ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, here this is a non-static variable. नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? अब देखो ये चीज़ थोड़ा एक्चुअली डिटेल में है, जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ तक आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड दिस इज़ अ नॉन स्टैटिक फंक्शन. नॉन स्टैटिक कैसे पता चला? अगर स्टैटिक लिखा हुआ है फंक्शन से पहले या वेरिएबल से पहले, मतलब डेटा टाइप से पहले अगर स्टैटिक लिखा हुआ है, देन इट इज़ स्टैटिक वेरिएबल और अ मेथड. बट यहाँ पे कहीं स्टैटिक कीवर्ड वी आर नॉट यूजिंग इट, दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन स्टैटिक. और नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेथड के अंदर, नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई वी कैन डायरेक्टली प्रिंट हेयर व्हाट? एक्स एंड वाई, है ना? बट इफ़ यू लुक एट हेयर, वी आर यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक. सो स्टैटिक फंक्शंस के अंदर वी कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स. हम नॉन स्टैटिक को यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली. मीन्स इफ़ आई राइट हेयर x इज़ इक्वल टू 10, सो इट विल गिव यू द कंपाइल टाइम एरर, ठीक है? कि नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इनसाइड द स्टैटिक फंक्शन, ठीक है? तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए? वी नीड व्हाट? ऑब्जेक्ट नेम. सो इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ रहा है? ओबीजे डॉट, यानी कि ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम कर रहे हैं, ठीक है? बट इसको ज़्यादा डिटेल में अभी हम अपकमिंग वीडियोज़ में वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है? ये बाद में डिस्कस करेंगे. अप टू हियर इट्स एनफ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट फॉर योर क्लासेस and object definitions we have discussed, features of objects we have discussed, then some questions related to your class we have discussed. Now in the next video, after this, in the next video we will discuss some questions of classes and objects, some questions that you have to note it down in your notebook, right? So this is enough for today. Thank you.